I hope you wrote the title ratio and proportion. चलो then anybody tell me what do you know about the ratio and proportion? ये दोनों सेम है अलग है? अलग अलग है? What do you think? फर्क क्या है दोनों में? रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा? Yes, any idea? Don't make me ask the same question repeatedly. कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो देना है ना. Yes, Sir, ratio we write A ratio A colon B, very good. and proportion we write A upon B. Okay, that's fine. At least you got some idea. Excellent. So I'll tell you. So रेशियो का सिंबल क्या है? ऐसा टू डॉट्स लिखते वर्टिकली है ना. रेशियो का ये सिंबल है. देन प्रोपोर्शन का सिंबल है एप्टीट्यूड में A upon B. फोर डॉट्स. ये प्रोपोर्शन का सिंबल है. ऐसा लिख सकते हैं या इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं. दोनों अलग अलग चीजें हैं. रेशियो इज डिफरेंट, प्रोपोर्शन इज डिफरेंट. रेशियो अलग है, प्रोपोर्शन अलग है. रेशियो के लिए ए सिंबल यूज करते, प्रोपोर्शन के लिए you can use four dots or is equal to. Anything is okay, not a problem. Okay, anything you can write. Okay, if I want to use this symbol, how many numbers should I have? ये लिखने के लिए, यूज करने के लिए कितना नंबर्स होना है मेरे पास? दो नंबर्स, राइट? For example, A and B are two numbers. These two numbers can be any type. They can be integers, they can be negative numbers. One is negative, one is positive. That can be decimal number, it can be rational number. Okay, no restriction. The number can be any type. Then, if I put that symbol between them, this is called A ratio B. कैसा पढ़ते हैं इसको? How do we read? Anybody read it? अरे ये कोई जवाब नहीं दे रहे. A ratio B, or you can read A is to B in Indian English. If you go to foreign America like that, they don't call A is to B, they read A to B. इंडिया में A is to B पढ़ते. अगर फॉरेन कंट्री में अमेरिका गए तो वहां A is to B नहीं बोलते, उसको A to B बोलते. ठीक है. So you can read A ratio B or A is to B. Now we are in India, so we call it A is to B or A ratio B. Every A is to B you can write in other form. That other form है A upon B. दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है. ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, बट फॉर्म्स आर डिफरेंट. यू राइट A upon B और A रेशियो B, बोथ सेम ही है. ये पूरा रेशियो के लिए है. आई होप यू अंडरस्टूड. डू यू अंडरस्टैंड? एनीबडी एनी क्वेश्चंस? I think it's clear, right? Okay. Then, if I write the ratio like this, A upon B, यहाँ टू नंबर्स है ना, तो ऊपर वाला नंबर को क्या बोलते, नीचे वाला नंबर को क्या बोलते? एनीबडी? व्हाट डू यू कॉल A? व्हाट डू यू कॉल B? इफ आई राइट 7 upon 8, 7 को क्या बोलते, 8 को क्या बोलते? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. वेरी गुड. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो A होगा न्यूमरेटर एंड B होगा डिनोमिनेटर. बट अगर मैं इसका फॉर्म बदल दिए, A अपॉन B को A is to B लिख दिया मैंने, देन अब भी वही नेम्स होगा या चेंज होगा? A एंड B का नाम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही होगा और इट गेट्स न्यू नेम्स. क्या बोलते हैं आप लोग? चेंज होता. फिर क्या बोलते? A को क्या बोलते या B को क्या बोलते? एनीबडी एनी आइडिया? नो? आई विल टेल यू. देन ये पूरा A रेशियो B है. ओके, दिस इज A रेशियो B and it is A upon B. When I write A upon B, this A is called numerator, B is called denominator. If I write like this is called A ratio B.
R A is to B. But what is the name of A and what is the name of B? इसका नाम क्या है? यह न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है ना. अगर ऐसा लिखे तो A का नाम क्या होगा, B का नाम क्या होगा? ये है मेरा क्वेश्चन. I'll tell you. This first number is called antecedent and second number is called consequent. अगर किसका फॉर्म को बदल दिए ना, then first number is called antecedent, second number is called consequent. 7 upon 8, you can write 7 ratio 8. Then यहाँ 7 होगा antecedent and 8 होगा consequent. So ये है रेशियो के बारे में. बाद में हम पता कर लेते हैं प्रपोर्शन क्या है. फर्स्ट लेट अस लर्न अबाउट द रेशियो, देन वी टॉक अबाउट द प्रपोर्शन. ठीक है, चलो. देन ये क्या है रेशियो? फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो. P and B are any two numbers, then a 2 dots B is called ratio. Then in two numbers ratio, A is called antecedent and B is called consequent. आ गया ना समझ में? Then do you think there must be only two numbers in the ratio or more than two numbers से भी रेशियो बना सकते हैं या नहीं? Yes, can I write ratio by using more than two numbers also? Yes, wonderful. Then there is no limit for the numbers. You can use any numbers to write the ratio. 3 numbers ratio, 4 number ratio. You can write any numbers ratio. Say this is a 4 number ratio, for example. And here I have some 3 number ratio. There is no limit for that. But particular the terminology antecedent and consequent use करना है only whenever it is a 2 number ratio. अगर ज़्यादा है तो ये names we should not use. Right? This is just basic about the ratio. Then there are some basic level questions, but very, very important, most frequently asked questions. Let us do few basic level questions, but don't ignore very important. There is a question for you. First you try yourself, post your answer, then later discuss करेंगे इसके बारे में. You have 30 seconds time to solve this. Everybody should try and post your answer. Don't worry about the right or wrong. Very good. And anybody else? First answer posted by Anshul. What about others? I'm waiting for other responses. Guys, whatever your answer, don't worry. तो सही है गलत है ये आपका काम नहीं है. जो मिला है आंसर वो पोस्ट कर देना. That will help me your approach. Then I can explain more better way if I understand your approach. उसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ पोस्ट करने के लिए सब लोग. वर्षा, क्या हुआ? संदीप, भावना, आदर्श, वेट करूं अभी या करेंगे? वर्षा, टेल मी, यू वांट मी वेट या एक्सप्लेन करूं? सर एक्सप्लेन कर दो. ओके ठीक है, चलो देन सब लोग यहाँ ध्यान देना है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन 3 डिफरेंट वेज फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अलग अलग तरीका से 3 मेथड्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन. हियर फर्स्ट मेथड, a is to b is given or a ratio b is given 2 ratio 5.
and B ratio C is given 3:7. हमें फाइंड आउट करना है A:B:C। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊंगा। ए का 2 ले सकते, सी का 7 ले सकते, बट यहाँ बी के लिए एक प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट रेशियो में बी का वैल्यू 5 है, बट सेकंड में बी का वैल्यू 3 है। कौन सा नंबर लेना, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, हाउ शुड बी डिसाइड विच नंबर शुड बी टेकन। अगर अलग अलग नंबर्स है तो इसमें से एक नंबर भी नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, बट वी हैव टू मेक बोथ द नंबर सेम। ये दोनों नंबर्स को सेम करा देना, पहला उसको सेम करना है। उसके लिए क्या करते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच। ये पहला वाला पूरा 2 रेशियो नंबर्स को सेकंड रेशियो में बी का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, एंड ये सेकंड रेशियो पूरा नंबर्स को फर्स्ट में बी का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। देन न्यू रेशियोस मिलेगा। देन व्हाट विल आई गेट, a ratio b, 3 times 2 is 6, and 3 5 is 15, 6 is to 15। ये 6 is to 15 2 is to 5 से अलग नहीं है। देखो 6 is to 15, if I simplify this, बोथ आर डिवाइड बाई 3 है ना। 3 2 टाइम्स 3 5 टाइम्स, दोनों सेम है, 2:5 ही होगा ये। देन यू राइट 2:5 और 6:15, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों सेम ही है। सिमिलरली हियर 5 3 15 is to 5 7 35। Then we could make b value same in both the numbers. Now we can write a is to b is to c। a value 6 लेंगे एंड b वैल्यू दोनों के जगह सेम ही है, 15 लेते हैं यहाँ। c वैल्यू मिला है हमें 35। देन 6 is to 15 is to 35 होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या ये ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन के लिए? इज इट क्लियर विद ऑल? आए ना समझ में? इफ एनीबडी नॉट क्लियर प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। 5 सेकंड में पोस्ट कर देना EXP, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। I think everybody got clear. Now let me explain the same question in different method. Why should I explain different method? ये मेथड में क्या है, एक डिसएडवांटेज, ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन इट इज अ टाइम किलिंग। जहाँ कैलकुलेशन ज्यादा होगा वहां टाइम किल होते रहता। उसलिए टू अवॉइड द टाइम किलिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन अदर मेथड। द सेकंड मेथड है A:B is given 2:5, and B:C is given 3:7। अभी एक मैं ट्रिक बताऊंगा, 5 सेकंड में आप आंसर लिख सकते। A:B:C, ये 5 सेकंड का काम है ये। इसके लिए आप ये पैटर्न याद कर लेना, रिवर्सियन पैटर्न बोलते हैं इसको। इसमें 3 स्टेप्स होगा। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और ये स्टेप 3 है। इसको रिवर्सियन पैटर्न बोलते हैं ना, एन जैसा है ना, ये रिवर्सियन जैसा है। ये पैटर्न यहाँ यूज करेंगे हम। स्टेप 1 ये है ना, स्टेप 1। देन ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स 3 इज द 6। एंड देन सेकंड स्टेप क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेकंड स्टेप 3 टाइम्स 5 15। और थर्ड स्टेप है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो थर्ड स्टेप में, 5 टाइम्स 7 35। मिल गया अपना आंसर, 6:15:35, ऑप्शन सी है। कौन सा तरीका बेटर है? विच वन यू लाइक, फर्स्ट वन और सेकंड वन? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मेथड 1 और मेथड 2। फर्स्ट वन ठीक है अंशुल, ओके दैट्स ग्रेट। देन एनीबडी लाइक सेकंड मेथड? नोबडी लाइक्स? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, सुने आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सर सेकंड वाली समझ में नहीं आई अभी भी। सेकंड वन पूछना है ना, फिर मैं और एक बार सर बताऊं तुझे। सेकंड एक बार और से सुनना। हाँ ठीक, मैं बताऊंगा ना, उसी लिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना। अगर समझ में ना आए तो बता देना। ओके, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, बट यू हैव टू आस्क मी, राइट?
सो A:B इज गिवन 2:5। अगर नहीं पूछे तो मुझे कैसा पता चलेगा आपको समझ में आया या नहीं? द पर्पस शुड बी सर्व्ड। आप बात करें तो मुझे समझ में आता, उसे लो तो एवरी टाइम आई एम आस्किंग यू प्लीज टॉक, ओपन योर माउथ। Okay, this is the given information. A:B is given 2:5. B:C is given 3:7. I wanted to know what is A:B:C. Okay, ये होना है मुझे। देन इसके लिए एक पैटर्न दे रहा हूं मैं। द पैटर्न इज लाइक दिस, 3 स्टेप पैटर्न। स्टेप 1, स्टेप 2 and step 3. I am using this pattern to write A:B:C. सो स्टेप 1 में क्या है? ये है स्टेप 1 में, का मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 6 हो गया। एंड स्टेप 2 में क्या है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 × 5 15। एंड थर्ड स्टेप में ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5 × 7 35। अभी आया समझ में? फिर भी कंफ्यूजन है? अभी बताइए कौन सा मेथड ठीक है, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इजी है ना? यू कैन सेव टाइम लाइक एनीथिंग। यस, ओके, गुड। Then I'll explain third method also. Then finally you decide you are happy with the which method. Okay. Now method 3 में जाएंगे. In the question it is asked to find out A ratio, B ratio, C. हम क्यों फाइंड करना है? इसमें से एक होगा ना करेक्ट आंसर। देन सेलेक्ट कर लेते कौन सा आंसर करेक्ट है। जस्ट भी गो विथ ऑप्शन वेरिफिकेशन करने का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। खाली जो आंसर करेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो यर वट एवर द नंबर्स गिवन इन द ऑप्शंस, ये पूरा ए बी सी के लिए है ना। 287 का मतलब ए बी सी वैल्यूज है, या 10 15 30 ए बी सी वैल्यूज है, ये पूरा ए बी सी वैल्यूज है। सो फर्स्ट ऑप्शन आई एम वेरीफाइंग A:B क्या होना चाहिए? 2:5 होना है। देन यहां से मैं A:B ले रू। देन इसका रेशियो क्या होगा सिंप्लीफाई करने के बाद? 2 1 एंड 2 4 1:4 हो रहे यहाँ। बट मुझे चाहिए 2:5, ये मैच नहीं हो रहे। देन ऑप्शन इज रॉन्ग। इफ आई वेरीफाई ऑप्शन बी, फर्स्ट आई एम चेकिंग विद द A:B। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? 5 2 10, 5 3 15, 2:3 मिल रहा है। बट मुझे होना है 2:5। देन ऑप्शन बी गलत है। देन ऑप्शन सी वेरीफाई कर रहा हूं मैं, A:B चेक कर रहा हूं मैं। इसको सिंप्लीफाई करे तो 3 2 6, 3 5 15, 2:5, ये मैच हो गया। देन B:C ऑल्सो मैच होना है ना? वो करेक्ट अगर है तो सेकंड नंबर भी मैच होना है, सेकंड रेशियो भी मैच होना है। सेकंड क्या है? दिस द B:C। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 3 15, 5 7 35, 3:7 मिल गया मुझे, सेकंड वाला भी मैच हो गया। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गाइस इज दैट क्लियर और यू वांट मी एक्सप्लेन अगेन ये ऑप्शन वेरिफिकेशन का? क्लियर? ओके, नाउ टेल मी विच मेथड यू लाइक आउट ऑफ ऑल द 3 मेथड्स। इंडिविजुअल ओपिनियन होगा, देन इंडिविजुअली पोस्ट कर दीजिए। Someone may like first method, someone may like second method or third method. Just let me know your understanding and your liked method. Second, okay, others ठीक है, okay. Second, both दोनों अंशुल very good. चलो then. I understood you don't want first method, you wanted to go with second or third method. That's great. Okay. Okay, right, Varun. Then let us see one more question. Yeah, try this. Everybody should try and post your answer. You have 1 minute time to solve this.
ओके, only two responses till now. I'm waiting for others also. Okay, three people responded. Okay, now I got different answer also. Then check करना पड़ेगा. अंशुल तो कुछ अलग से कर दिए. Wonderful. Then everybody attention here. Let us see what happens in this question. Here, in the given information, A, B, C, D, E. So, five different alphabet are given. But finally, we need to find only the relation between A and E. Then the question is, how do you get only A and E? Then बाकी पूरा B, C, D को eliminate करना पड़ेगा. Then only you will get A and E. है ना? A, B, C, D, E में से finally we need only A and E. का मतलब B, C, D को eliminate करना है by approaching any mathematical way. Then what is the best approach to eliminate B, C, D? ऐसा सोचना पड़ेगा आपको. Then for that, I'm using other form of the ratio. A is to B का other form क्या है? How do you write A is to B? I can write A upon B, right? Agree? Similarly, B is to C को B upon C लिख सकते. C is to D को C upon D लिख सकते. D is to E को D upon E लिख सकते. My target is only A and E. बाकी पूरा eliminate करना पड़ेगा. Then what is the best mathematical operation between all four fractions to eliminate BCD? कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं ये चारों के बीच में? आदर्श, यू गॉट द आंसर. वंडरफुल. आदर्श, क्या करना है ये चारों रेशियो को बीसीडी को कैंसिल करने के लिए? मल्टीप्लिकेशन कर दो, है ना? वेरी गुड, क्रॉस कर दो. देन the original A upon B is given 2 upon 3 into B ratio C is given 5 upon 14 and C ratio D is given 7 upon 10 and D ratio E is given 8 upon 7. Then दोनों तरफ simplification करो. Finally you will get your required answer. ये B and B दोनों लड़के मर गया, C and C गया, D and D गया. In the LHS we are left with only A upon E is equal to. यहाँ क्या होता है देखेंगे. 2 times 7 14, 14 गया and 5 2 times, then 2 4 times. In the numerator only 4. In the denominator 3 times 7 21. So 4 upon 21 A upon E का मतलब A ratio E होगा 4 ratio 21. Option D is the 100% correct answer. Right? I hope everybody got it. वरुण आया ना समझ में? Yes. सर पूरा समझ में नहीं आया सर, आधी प्रोसेस सही समझ। हाँ, no problem. I'll explain. So पहले से explain करूं? Okay. First सर इसमें शुरू से तो आ गया था सर, हाँ थोड़ा शुरू लास्ट में से कर दीजिए। लास्ट में से. हाँ ठीक है. देन ये कन्वर्शन तो समझ में आ गया ना. ए इज टू बी को मैं ए अपॉन बी लिख रहा हूँ, बी इज टू सी को बी अपॉन सी लिख रहा हूँ एंड सी इज टू डी को सी अपॉन डी इंटू डी इज टू ई को डी अपॉन ई. इसका वैल्यूज भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ. ए इज टू बी का क्या है 2/3 इंटू ये बी अपॉन सी का क्या लिखना है मुझे 5/14 लिखना है.
एंड सी इज टू डी का 7/10। अभी दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस कर रहे हैं हम, ठीक है। डी इज टू ई का 8/7, डी इज टू ई का 8/7। देन दोनों तरफ सिंप्लीफिकेशन कर दो। क्या होगा यहाँ सिंप्लीफिकेशन? ये दोनों बी कैंसिल हो जाएगा ना, सी एंड सी गया, डी एंड डी गया, और क्या बाकी है एलएचएस में? यहाँ ए बाकी है, एंड इधर डिनोमिनेटर ई है। देन डिनोमिनेटर में ई लिख लो मैं। यहाँ कैंसिलेशन कैसा करते हैं? दिस इज टोटल अप टू यू, कैंसिलेशन कैसा करना है आप डिसाइड कर लेना, राइट। देन ये 7/7 गया, देन 5 2 टाइम्स, अगेन दिस इज 2 4 टाइम्स, again this is 2 7 times. Then numerator में what is left? Only 4 is left in the numerator. Denominator में 3 into 7 बच गया, 3 into 7 21. Then a upon e equal to 4/21. a upon e और कैसा लिख सकते? a रेशो e लिखते ना, अदर फॉर्म, जस्ट दिस आर डिफरेंट फॉर्म, मीनिंग तो सेम है। a upon e और a रेशो e, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में, फॉर्मेशन इज डिफरेंट। सो 4/21। देन योर आंसर इज ऑप्शन डी। ये ए रेशो ई फाइंड आउट करना है हमें। अभी आया ना समझ में? यस सर, यस सर। ओके, देन और एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसा पूछना आप, अगर कुछ भी डाउट है, वॉट एवर द डाउट, इवन वेरी सिंपल, प्लीज आस्क, feel free to ask the doubt. One more question is there for you. First try yourself and post your answer. More you ask, more you learn. कितना ज्यादा क्वेश्चंस डाउट्स पूछे तो उतना आप समझ समझ ले सकते। If you keep quiet, even you don't understand, what is the use? You will be the ultimate loser if you don't ask. ऑप्शन वेरिफिकेशन कर दो, जल्दी हो जाएगा। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, जस्ट वेरीफाई विद ऑप्शंस। ओके, वेरी गुड। यस अंशुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो वी डू ऑप्शन वेरिफिकेशन, दैट्स द बेस्ट वे हियर। ये पूरा ऑप्शंस में जो नंबर्स है ये ए बी सी डी का है ना? ए बी सी डी का नंबर्स है पूरा ऑप्शंस में। देन वेरीफाई करते, फर्स्ट नंबर ए बी का रेशो 7/3 होना है। देन आई विल टेक ए ओनली ए बी का रेशो। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलता है? 3 3 9, 3 4 12, 3/4 हो रहा है यहाँ।
बट हमें चाहिए 7:3, देन मैच नहीं हो रहा है, देन ऑप्शन ए रॉन्ग। देन बी में चेक करते ए रेशियो बी का। देन इसमें अगर ओनली ए रेशियो बी लिए हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 7 टाइम्स 2 3 टाइम्स 7:3 मिल गया ये। देन बीस टू सी भी चेक करना पड़ेगा। बीस टू सी क्या हो रहा है, 3 2 6, 3 3 9, 2:3। यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं ना। 2 3 टाइम्स 2 5 टाइम्स 3:5 होना है बीस टू सी। यहाँ तो 2:3 हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी गलत है। देन सी में चेक करते हैं। फर्स्ट ए रेशियो बी, 3 7 3, 3 7:3 मैच हो गया। एंड ये बीस टू सी 3:5 होना है, बीस टू सी का मतलब ये 3 3 9, 3 5 15, 3:5 मैच हो गया। देन सी टू डी 15:17, तो सी टू डी 15:17 बराबर है। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर गाइस एवरीबडी? आदर्श एंड अंशुल तो कर दिए ऑलरेडी। एनीबडी स्टिल डाउट? डन विद ऑल? ओके गुड। So this is all about the ratio. Then अभी proportion क्या है देखेंगे। Right, let me explain something about the proportion. To write the proportion, we use the symbol 4 dots, or you can use is equal to symbol also, makes no difference. Okay, ये बताइए, if I want to use 2 dots, then how many numbers I require to use this symbol? कितना नंबर्स होना चाहिए मेरे साथ ये सिंबल यूज करने के लिए? Yes. How many numbers I need to write this symbol, to use this symbol? 2. 2. Okay. Why 2? यहाँ 2 dots है, इसलिए 2 नंबर चाहिए. I need 2 numbers. Now can you tell me how many numbers I need to use this symbol? यहाँ 2 dots है, 2 numbers होना है। यहाँ कितना dots है? 4 dots है ना? Then 4. we need 4 numbers. That's it. It is a simple concept. 2 left side, 2 right side. हाँ एग्जैक्टली exactly. पूरा 4 होना चाहिए। For example, I have 4 numbers with me, say A, B, C, D. Then इसको proportion format में लिखना है। कैसे लिखना? 2 नंबर्स लेके रेशियो बना दो, और बाकी 2 नंबर्स लेके और एक रेशियो बना दो। देन दोनों के बीच में 4 डॉट्स लिख दो, या इज इक्वल टू सिंबल लिख दो, हो गया ये प्रपोर्शन। इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। आए ना बात समझ में? बट द क्वेश्चन इज, can I take any 4 numbers, or is there any restriction in it? Can I use any 4 numbers? और कुछ रूल्स है, कुछ restrictions है, कुछ constraints है? Anybody tell me? Yes, no. Can I use any 4 numbers to write the proportion? खाली yes no बता दो। No, very good. Then पता है क्या है रूल्स, क्या है restrictions, क्या है constraints? Anybody knows? Definitely I cannot take any 4 numbers. पर्टिकुलर 4 नंबर से यूज करना पड़ेगा। देन क्या है रूल्स, मैं बताऊंगा। देर आर 2 रूल्स इन राइटिंग द प्रोपोर्शन। ओके, फर्स्ट कंस्टेंट इज ऑल द 4 नंबर्स मस्ट बी डिफरेंट। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी। चारों के चार अलग अलग नंबर्स लेना है प्रोपोर्शन के लिए। ओके, एंड सेकंड रूल इज, अगर ये पहला रेशियो है ना, ए रेशियो बी को सिंप्लीफाई करो, और सी रेशियो डी को भी सिंप्लीफाई करो फ्रैक्शन लिख के। सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। दिस इज सेकंड कंस्टेंट।
If any this kind of format is following these two rules, then only we call it as a proportion. Otherwise, not at all it is a proportion. Do you understand, guys? Anybody wanted me explain this again? Or you got it? Chalo then, here I will write something. You should tell me this is the right proportion or wrong proportion. Take है? Tell me, is this right proportion or wrong proportion? Yes, no. राइट ओके दिन चेक करते पहला रूल क्या है ए बी सी डी चारों के चार अलग अलग नंबर्स होना है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया देन सेकंड कंडीशन क्या है फर्स्ट रेशियो आई शुड राइट 3/4 इसको सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं कर सकते सेकंड रेशियो 9/16 डू यू थिंक बोथ वैल्यूज आर सेम ये इक्वल है क्या अंकित यस सर। इक्वल होगा आर यू श्योर 3/4 क्या एक बार कैलकुलेटर लेके चेक कर दो 3/4 का वैल्यू क्या होगा 9/16 का वैल्यू क्या होगा दोनों इक्वल अगर हो रहे तो ठीक है अदरवाइज वो गलत प्रोपोर्शन है मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर ओपन करके अगर 3/4 लिया ना मैं इसका वैल्यू मुझे मिला है 0.75 मिला है मुझे और इसका चेक करूं मैं 9/16 का क्या मिल रहा है 9/16 वैल्यू मुझे मिल रहा है 0.56 नाइन मिल अपॉन रहा है सिक्स मुझे को सिंप्लीफाई करा था सर। नाउ टेल मी दोनों सेम है क्या 0.5 0.7 सेम नहीं हो रहे हैं ना देन दिस इज द रॉन्ग प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन ऐसा नहीं होगा कभी भी ये गलत प्रोपोर्शन है आई थिंक यू अंडरस्टूड देन आई राइट वन मोर प्रोपोर्शन let me know I write the right proportion or wrong proportion. ये सही है गलत है बता देना is it right proportion or wrong proportion right सर very good then explain करो why it is correct anybody आदर्श बोल दो why this is a right proportion सर ये इज इक्वल टू है इसका मतलब क्रॉस डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू आएगा ये। हाँ 4/8 लिख रू मैं इसका वैल्यू क्या होगा ये सेम आएगी दोनों की। 1/2 एंड 3/6 ये भी 1/2 मिल गया दोनों सेम है ये सेकंड कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन है चारों के चार अलग अलग नंबर है दैट्स व्हाई इट इज अ राइट प्रोपोर्शन आई थिंक दिस इज क्लियर ठीक है और एक क्वेश्चन है मेरे पास दिस इज कॉल्ड 4 नंबर प्रोपोर्शन ठीक है इसमें 4 नंबर्स ले रहे इट इज कॉल्ड 4 नंबर प्रोपोर्शन कैन आई राइट ए प्रोपोर्शन बाय यूजिंग जस्ट 3 नंबर्स यस नो बता दो कैन आई राइट प्रोपोर्शन बाय यूजिंग ओनली 3 नंबर्स मेरे पास खाली 3 नंबर्स है मैं लिख सकता हूँ या नहीं प्रोपोर्शन यस नो यस एनीबडी डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन कैन आई राइट ए प्रोपोर्शन यस अंशुल वेरी गुड एनीबडी सेज नो खाली 3 नंबर्स यूज करके प्रोपोर्शन लिख सकते या नहीं अंशुल सेज यस आई एम वेटिंग फॉर मोर responses अर्पित व्हाट डू यू से भावना हेमंत संदीप अरे कुछ ना कुछ बोलो यार वर्षा सर नहीं कर सकते 3 नंबर। नहीं कैसे ठीक है नो प्रॉब्लम देन हियर वन रिस्पॉन्स इज नो वन रिस्पॉन्स इज यस देन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते
3 नंबर से प्रोपोर्शन हो जाएगा या नहीं. ओके. सर वो दोनों रिस्पॉन्स मैंने दिए थे. अरे देन एनीबडी डिफरेंट पीपल प्लीज रेस्पॉन्ड. नो. वर्षा सेइंग यस. ओके, नो प्रॉब्लम. देन अलग अलग रिस्पॉन्सेस मिल गए मुझे, प्रॉब्लम नहीं. ठीक है देन. सो टाइम अप नाउ. हियर वी स्टॉप. वी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. देन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हो सकता है या नहीं हो सकता. टिल देन इट इज ओके. इन क्या बोलते हैं, ओके ठीक है, वो वर्ड मुझे नया आ रहा है. चलो देन, एनीवेज, थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट क्लास. बाय फॉर नाउ. कीप ऑन थैंक यू. प्रैक्टिसिंग.